Assalamu alaikum students, welcome to grade 5 science class. Today we are starting our science book, this book, Butterfly Science 5. Now let's start with the cover page of this book. What do you see happening here? Well, you see doctors and you see these robots. And do you know what is this? This is a human being. So what these machines are doing to this human being? Well, these are robots. And do you know what robots are doing? They are doing an operation on a human being. I don't know what exactly they're doing, but it might be that they're removing some kind of cancer or some stones or doing some kind of stitching inside human body. Now, how is that possible? Well, this is science. Science has advanced. अब robots जो हैं उनको कंप्यूटर पे बता दिया जाता है कि उन्होंने क्या ऑपरेशन करना है, किधर करना है, और फिर वो ऑपरेशन करते हैं। और डॉक्टर्स जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर बैठ के, जैसे आप गेम्स खेलते हैं ना मोबाइल के ऊपर, तो वैसे वो देख के रोबोट्स की मदद से ऑपरेशन करते हैं। इन फ्यूचर ऑल ऑपरेशंस विल बी डन बाय रोबोट्स बाय डॉक्टर्स हु विल बी सिटिंग समवेयर एल्स। तो डॉक्टर कहीं और बैठे होंगे और रोबोट्स इंसान की बॉडी में जा रहे होंगे और ऑपरेशन हो रहा होगा। इस तरह ऑपरेशन करने से क्या फ़ायदा होगा? इसके दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि जो रोबोट्स हैं ना वो गंदगी कम फैलाएंगे, क्योंकि वो सांस नहीं लेते, उनका थूक नहीं निकलता। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमें हमारे सांस के साथ जर्म्स बाहर निकलते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं डॉक्टर हूँ और मुझे फ्लू हुआ है और मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो शायद मेरा ऑपरेशन तो कामयाब हो जाए, लेकिन मेरा फ्लू जो है वो उस इंसान को लग जाए जिसका मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं एक दूसरे कमरे में बैठ के स्क्रीन के ऊपर रोबोट्स की मदद से ऑपरेशन करूँगा, तो फिर इंसान को मेरी बॉडी के जरासीम नहीं लगेंगे। दिस इज़ वन बेनिफिट, that patients will not be affected by my germs. दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा ये है, आप मेरे हाथ को गौर से देखें। मेरे हाथ की फिंगर्स का एक स्पेसिफिक साइज़ है, ये इससे छोटा मैं नहीं कर सकता। तो अगर मैंने ह्यूमन बॉडी के अंदर हाथ डाल के कोई चीज़ निकालनी है या कोई चीज़ काटनी है या किसी चीज़ को बांधना है, तो आई डोंट हैव मच स्पेस, बिकॉज ह्यूमन बॉडी जो है उसको अल्लाह ताला ने बहुत कम्पैक्ट बनाया है। उसमें बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती कि हम हाथ डाल के वहाँ पे ऑपरेट कर सकें। वेल, दैट्स नॉट द केस विद द रोबोट। रोबोट का जो हेड है वो एक सुई जितना पतला भी हो सकता है, उसके ऊपर जो नाइफ लगी है वो बहुत छोटी सी हो सकती है, तो इट कैन गो enter deep into the human body and perform the procedure without making much damage. तो जब हम इंसान ऑपरेशन करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा कट लगाना पड़ता है और फिर हम अंदर जाते हैं। मशीन्स जो होती हैं वो बहुत छोटा सा कट लगा के अंदर चली जाती हैं। So that's why operations of the future will be done by machines. Now today we will be starting our first chapter, which is It's Nano's World After All. इसका title है It's Nano's World After All. Well, before we start this chapter, we have to discuss some key words that come in this chapter. What are those? Let's start with word nano. You know what nano means? Nano is a Greek word which means very small, very tiny, minute. So nano deals with things which are very small, very small. Look at this. So
There are big things and then there are nano things, very small things. Now, which things we would call nano? Well, when we come to atoms level, then those things will be called nano. So, what is an atom? Atom is the basic structure of things. Inside an atom, there is a nucleus, and the nucleus has neutrons and protons. And outside the nucleus, there are electrons moving around in an orbit. So, this is an atom. Now, when two atoms join together or three atoms join together, they form a molecule. So, for example, the molecule of water has three atoms. Two of them are hydrogen atoms and one is oxygen. This is a water molecule. Two atoms of hydrogen and one atom of oxygen come together to make water molecule. Now, we know that there is molecule. When more atoms join together, they make a molecule. And we know an atom, that atom is made of neutrons, protons and electrons. Now, there is subatomic level as well. So, what is subatomic level? Subatomic level is when we are dealing only with electrons or neutrons or protons. Then we are talking about subatomic level. Now, this we are discussing right now, electrons and neutrons and protons, but believe me, there are many other particles other than electrons and neutrons and protons, and we will be talking about them later on in higher classes. So today we have come to know that nano world is the world where things are very small. They are at the level of molecules and atoms. We have come to know what atom is, what molecule is, and what is known as subatomic level. Now you write the definitions that we have discussed today in your copy, draw some molecules and some atoms, and then send this work to your teacher and explain this work to your teacher when she calls you. Allah Hafiz.